we go on, please subscribe the channel. I need your support. So today's topic, as I eventually, ultimately, and finally, they all are same. They have the same meaning. In the end of some event, we use either eventually, ultimately, or finally. We are going to discuss in today's video. Okay, so they are synonyms. Maybe you can say they are synonyms. They all three words used to show something happened after certain period of time. आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आपने थोड़ा कुछ किया, उसके बाद मेहनत करी, उसके बाद जो रिजल्ट आया कुछ समय के बाद, दैट रिजल्ट इज शोन इज that time you use eventually, ultimately, and finally. So the meaning of these three words is in the end or at the end. Okay, let's begin with eventually. Eventually, something happened after a delay. It means like you were trying to do something, okay, but it got delayed and delayed and delayed, but at the end, in the end, it happened. The thing executed, the thing happened. So इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो पीरियड ऑफ टाइम है, सपोज कि मैंने कल से कोई काम शुरू किया और मैं उसको धीरे धीरे कर रही हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा. फाइनली वो उसका एक रिजल्ट आया. वो टाइम बहुत सारा लगा लेकिन वो ख़त्म हो गया. इवेंचुअली इट हैपन, इवेंचुअली आई डिड इट. ओके, तो जो पीरियड ऑफ टाइम जब हम उस रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने वाले हैं, उस समय पे हम यूज़ करते हैं इवेंचुअली. ओके, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज इवेंचुअली दे गॉट टू द हॉस्पिटल ऑन टाइम. So they might have started late or they might got stuck in the traffic and they were expecting that they will not reach hospital on the time, but eventually they got to the hospital on time. वो टाइम पर पहुंच गए. इवेंचुअली को आप अंततः, हिंदी में यदि आप उसको बोलना चाहें, जब हम अंततः एक वर्ड होता है उस का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है इवेंचुअली. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज I found my pen eventually. I was looking for my pen for so long and then eventually I found it. So in the end, I found my pen. I was looking it for a long time, then eventually I found it. Next example is eventually I planned to have a dog. I was thinking since long to have a pet, maybe a dog, a cat, a fish or a turtle, but eventually I planned to have a dog. Last में मैंने पूरा decide कर लिया that I will have a dog. Okay, next is I looked for my glasses everywhere. I looked for my glasses everywhere. I found them on my head eventually. Okay, so I was looking for my glasses everywhere in the house. Eventually I found them on my head because they were not in the house, they were on my head. का मीनिंग समझ में आया. अंततः एक बहुत सर्टन टाइम के बाद आपने कुछ काम किया, उस सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद एट द एंड यू रीच्ड to some conclusion or you reach to the result. Okay, that time we use eventually. Now the second word, ultimately. Ultimately is the finishing point in a process. किसी भी प्रोसेस का ख़त्म होने का जो टाइम होता है, that's called ultimately. और a series of events in most important manner at the end. कोई भी बहुत important series, कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि आप वॉक कर रहे हैं, फिर आप रन कर रहे हैं, फिर आप एक कहीं जगह पहुंचना चाहते हैं. अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है, दैट टाइम यू यूज़ अल्टीमेटली. इसको हम एग्जाम्पल के साथ और देखेंगे, तब आपको इवेंचुअली और अल्टीमेटली के बीच का जो अंतर है वो समझ में आएगा कि आपको इवेंचुअली कहाँ यूज़ करना है और अल्टीमेटली आपको कहाँ यूज़ करना है. द कमेटी अल्टीमेटली अडॉप्टेड द सजेशन. हम यहाँ पर इवेंचुअली नहीं बोलेंगे, अल्टीमेटली बोलेंगे, क्योंकि एक सीरीज थी, आपने प्रेजेंटेशन किया, आपने बहुत सारे काम किए, उसके बाद कमेटी को आपने कन्विंस किया और कमेटी ने आपका सजेशन अडॉप्ट कर लिया. सो द कमेटी अल्टीमेटली अडॉप्टेड द सजेशन. Okay, so there was a series of events,
series of events in this example was like you submitted your project or your suggestion, you try to convince for the committee members to adopt your suggestions, and then committee adopted your suggestions. Okay, ultimately you will have to make a decision after doing so much work, thinking of the event, and then ultimately you have to make this decision. Okay, so suppose I am planning to take a course in some university. That university I haven't decided yet, but I know the course. Okay, so ultimately I have several universities in my mind, but and many people gave me the suggestions, but ultimately the result, the decision will be mine कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में जाना है. सो अल्टीमेटली यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन. उतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में से मुझे एक पक्का करके, एक डिसाइड करके, देन आई हैव टू प्रोसीड टुवर्ड्स दैट डिसीजन. ओके, सो अल्टीमेटली यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन. नेक्स्ट, you should be confident. Ultimately it's your decision. So I decided to go in that university, then I should have confidence in myself that my decision is correct. So somebody is telling me you should be confident because ultimately the decision is yours. You should be sure about it. Okay, that's the final result. You should be sure about it. Next है, the changes suggested by you ultimately proved to be necessary. Okay, so मैंने कुछ सजेशन दिए कंपनी को कि इस तरीके से अगर हम चेंज करते हैं हमारे प्रोडक्ट में तो उसमें हमें फ़ायदा होगा. So ultimately they proved, the result proved that the suggestion which I provided was necessary. So ultimately is the final result after the series of events. So जैसे मैंने यहाँ बताया, इसमें मैंने सजेशन दिया, सजेशन का प्रेजेंटेशन दिया, कंपनी के सामने उसको रखा, एंड देन कंपनी ने उसको एक्सेप्ट किया. बट मेरा सजेशन सही था या कंपनी के लिए ज़रूरी था, वो फाइनल जो रिज़ल्ट आया बेस्ड ऑन दैट सजेशन जो रिज़ल्ट आया वो अल्टीमेटली वहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे फॉर द फाइनल रिजल्ट. बट द सीरीज ऑफ इवेंट्स वाज हैपनिंग ड्यूरिंग दैट अल्टीमेट रिजल्ट. ओके, बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड पे जो है फाइनली. फाइनली का यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं जब हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और जो लास्ट स्टेटमेंट हम देने वाले हैं उसमें, या फिर कॉमन कोई भी स्पीच आप दे रहे हैं स्टेज पे, तब आप इसका यूज़ करते हैं. कुछ प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं तब इसका यूज़ करते हैं. एंड इन फॉर्मल राइटिंग लाइक ऐसे राइटिंग, बुक राइटिंग, उस समय आप फाइनली वर्ड का यूज़ करते हैं, इवेंचुअली का यूज़ नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स. यहाँ पे आप इवेंचुअली आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स नहीं कह रहेंगे क्योंकि वो हो जाएगा वो आखिरी में मैं ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ. नहीं, आप बोलेंगे फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स. मान लीजिए मैंने किसी पानी में थोड़ा सा मैंने कोई कलर मिलाया एंड आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड आई वॉन्ट द रिजल्ट टू बी ब्लैक. देन द कलर ऑफ वाटर टर्न ब्लू, देन ग्रीन एंड फाइनली ब्लैक. ओके, अगर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ब्लैक होना, इवेंचुअली तब मैं यूज़ करती द कलर ऑफ वाटर टर्न ब्लू, देन ग्रीन, देन इवेंचुअली ब्लैक. ओके, so that's the difference between finally and eventually. And then next, for example, I finally finished the project. That's also an statement. Okay, I finally finished the project. मैंने उस प्रोजेक्ट को फाइनली ख़त्म कर दिया. ओके, अगर हम ऑल थ्री वर्ड्स को एक सेंटेंस में मिला के देखना चाहें तो वो सेंटेंस कैसा रहेगा देखिए, और आप इस सेंटेंस को अच्छे से देखें और खुद भी कुछ सेंटेंस बनाकर और आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं. सो ऑल थ्री वर्ड्स इन वन सेंटेंस. इट वॉज अ हार्ड हाइक. आई एम गोइंग ऑन अ हाइक. देन आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट वॉज दैट. आई एम टेलिंग समबडी हाउ वॉज द हाइक. इट वॉज अ हार्ड हाइक
and I was tired, but eventually I reached to the top and finally got to sit. It was ultimately breathtaking view. तो आपको समझ में आया इवेंचुअली, फाइनली एंड अल्टीमेटली के बीच का डिफरेंस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है ओल्ड स्टाइल लर्निंग। थैंक यू।